हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो को आम ओडिया पाठशाला को आपण मानक समस्त को वेलकम। तो आपण मैंने केमती अच्छी आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत ही भल थे मु भी बहुत भी भल अच्छी। तो आज आ गोटे नुआ भिडियो आणुची जोटा कि आपण मानक सिलेबस कहीदे मु क्लास 11th बायोलोजी तो फास्ट चैप्टर स्टार्ट करुच्ची जो मैंने 10th एग्जाम दे सारिकी समर कोर्स करि पारुना तो किसी जन मन थाए कि समर कोर्स कले किसी बेनिफिट्स मिल समर कोर्स करनी कि पढ़ी पारि ना सेमती किसी ना। तो आजिकल जेहेतु डिजिटल मीडिया माने सोशल मीडिया है यूट्यूब रे बहुत सारा आसूची तो आपण मानक जोटा भल लगुच तो देखु सोशल मीडिया रे सब एक्टिव रोचंती। तो समर कोर्स सेमती किसी ना कि समर कोर्स कले भल न कले भल जो मान पाखे पैसा आवेलेबल होनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रोची तो आपण मैंने तो समर कोर्स न कले भी एथरू पढ़ले भी हो तो से भाया पिला समस्त आनी आसुची भिडियोटी। तो फास्ट चैप्टर कौन यूनिट 1 आमर कौन थिला ना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड फास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम ये सब अच्छे है तापर एनिमल किंगडम। तो 4टा चैप्टर तो फास्ट आम देखा बुझेगा ये हेले एर्नस्ट मेयर हेले एटा एनसीईआरटी बही मु फॉलो करुच्ची। तो आई थिंक आपण मैंने जेहेतु 10th एग्जाम दे सारी तो सेमती किसी आइडिया नथिबो माने से आपण मानक हेल्प करी कि आपण मैंने एनसीईआरटी बही किणिकी फॉलो से पढ़ंतु आउ एनसीईआरटी बही फॉलो करूँ बहुत सारा एग्जाम आप क्रैक करेंगे बुझेगा बहुत जिन बुझे पारे। तो द लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी बा आपण मैंने जदि CHSE मीडियम रही तो CHSE मीडियम मान पिला मानक पई ही ए वीडियोटी। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी गोटे 9th क्लास रो गोटे चैप्टर थिला जोटा कि ओडिया में कहते जैव विविधता बुझेला। तो आपण मैंने जेहेतु नुआ आसचंती पढ़ुचंती तो आपण मानक ओडिया रे कहले आपण माने ठीक भल से बुझी पारिबे। तो व्यस्त हुंतुनी मु ही भल से बुझे देबे आपण मानक। तो चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड देखंतु how wonderful is the living world. The wide range of the living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, delicious forest, oceans, fresh water, take lakes, desert or hot spring, live or the speechless. The beauty of galloping hordes of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among populations of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect what what indeed is the life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is philosophical one and seeks answer to the what the purpose of life. As a scientist, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो लिविंग कहले आम कौन बुझे बुझेला। तो लिविंग वर्ल्ड तो आम वर्ल्डटा बुझेला आम पढ़ा कौन द लिविंग वर्ल्ड कहले कौन बुझुची आम देखा कि आम वर्ल्ड भितर लिविंग भी अच्छा नॉन लिविंग भी अच्छा। तो आम लिविंग जिनसटा पढ़ा आम वर्ल्ड भितर केते कौन लिविंग जिनस अच्छी सब केमती कौन कौ स्पेसीस कौ कैटेगोरी सब जाउछंती। तो आम से सब विषय आम पढ़ा है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड केमती कौन डाइवर्सिटी रोज। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग organisms be it potted plants, insect, birds, you pets or other animals and plants। माने आम देखा आम सराउंडिंग्स कौन कौन सब रोचे किछिटा पेट रोचंती पोषा जीवजंतु रोचंती आम चतुर्पार्श्व सब कौन कौन अच्छी चतुर्पार्श्व आम सब अच्छी केतटा गाई मैंने पोषुचंती बुझेला कुकुड़ा छेली मेंढा कि केतटा हूँ मांकड़ पोषुचंती केते जन पोषा करके रखुचंती केते माने गछरे से डेउचंती आम बाघ भालू गछ लता सब आम देखुचंती मनीष।
तो सेटा से कहूँ there are also several organisms that you can't see with your naked eye but they are all around you। आम नेकेड आई माने खाली आखिर आम किसी जन को देखी पारना से मैंने भी आम सराउंडिंग्स रे रोचंती जेमती कि तो आम किसी भाइरस है बैक्टेरिया है एमानक आम खाली आखिरे देखिपर ना नेकेड आई रे आम देखिपर नहीं एमानक माइक्रोस्कोप द्वारा देखा कहीं आम आखिरे आम जी छोट देखिपारती एमाने ताठू आहरी छोट बुझेगा तो आमको गोटे लेंस बा माइक्रोस्कोप द्वारा देखिपर बुझेगा। if you were to increase the area that you make observation in the range variety of organism that you see would increase obviously। if you were to visit a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it। each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species। the number of species that are known and describe range बुझेगा। describe range between 1.7 to 1.8 million। this refers to biodiversity or the number and types of organism present on the earth। we should remember here that as we explore new areas and even old ones new organisms are continuously being identified। माने से कहला कि आम देखा कंटिन्यूअसली जब आम अर्थ रे देखा तो आम अलग 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 प्रकार देखा तो सेटा होची बायोडाइवर्सिटी आम कहउचंदी। as stated earlier there are millions of plants and animals in the world। we know the plants and animals in our own area by their local names। these local names would vary from place to place or even within a country। probably you would recognize this the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about बुझेगा। से कहला टॉकिंग अबाउट टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट से कहला कि ये सब एथरे किछि भी बेसी नाही तो आम सब जो देखुं कि धर आमर सब बायोडाइवर्सिटी भीतर कौन कौन सब रोचे आमर गोटे लोकल नेम तुम धर तुम मैंने धर घरे अच्छ कि जोठी भी जाओ तुम सांग मैंने जी तुम गाँ को तुम गाँ को गला मैंने से मैंने कहे कि तुम रियल ना तुम जब तुम सांग मान पाखे जो नाटा कही तुम क्लास जो ना प्रेजेंट पढ़ुव अटेंडेंस पढ़ुव तो तुम से नाटा कही सी आसी कहला तुम गाँव में कहीं तुमको चिन्ह पारे कहीं तुम गाँव में तुम लोकल ना गोटे अलग अच्छी आ तुम साइंटिफिक ना गोटे मैंने तुम ओरिजिनल ना गोटे अलग अच्छी दुईटा जाक गोटे जिनस किंतु लोकल ना गोटे अलग धर आम ये गोटे सापटे देखा है तो आम कह कि रणा साप किंतु रणा सापटा से रणा साप कहून से किसी अलग कहते तार किसी अलग तार गोटे नुआ ना थी कि साइंटिफिक नेम थी बुझेगा तो से विषय आम ये पढ़ा। हेन्स देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by the same name all over the world। this process is called nomenclature। मान से nomenclature process रे आमे कौन करिया समस्त नेमिंग से माने करिसेंती जो साइंटिस्ट माने थिले तो से माने सेमती सुविधा कर दिया जे आमे सेमती चिन्हि परिबा बुझेला सेमती हला तो ट्री समस्त कहि थांते सब हला गछ तो एटा काई को लिंब गछ कोटा पणस गछ कोटा कदली गछ तो तार तार स्पेस समस्त फल दउछन समस्त फूल दउछन किंतु तांकर किछिटा स्पेसीस अलग बुझेला तो से फल मानकर ना सेमती निगला तो ताको पुणी सेठी जाके से अलग कौन ना देथे तो सेटा को नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन से करचंती तो सेटा हमें बढ़िया। obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to the what organism the name is attached to this is identification। तमें से कहला कि आइडेंटिफाई करबा केमती ना तार लोकल नेम रे आम आइडेंटिफाई सिना करदेबा तो आम धर तुम घरे गोटे एमती गोटे जीव आसे मन कर गोटे कोब्रा है कोब्रा साप तो कोब्रा स्नेकटा पशिगला तमे गोटे साइंटिफिक वन विभाग को फोन करी कह कोब्रा साप पशि जाए से पचारे माने कोब्रार पुणी केते भेराइटी अच्छी कोब्रा सिना गोटे जेनस तार स्पेसीस पुणी अलग कि
को वाला कोब्रा हो केमती कौन हो सेमती नेचर केमती कौन कोब्रा सब कोब्रार नेचर एका नुह तो सेटा हूँ कन्फ्यूज माने से कौन कन्फ्यूजन हो तो आइडेंटिफिकेशन करने से ना अच्छी अलग ना अच्छी जोटा को नोमेनक्लेचर कह जाउची तो सेटा को आमे देखिबा बुझेला। In order to facilitate the study, number of scientists have established producers to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in international code for botanical nomenclature. माने से एटा मन रखी था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN हैला एटा फुल फॉर्म तार। यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स नेम्ड एनिमल टैक्सोनॉमिक्स हैव इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICBN डाला बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICZN डाला जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर माने एटा हैला ट्री मानक पई एटा होची प्लांट एनिमल्स मानक पई। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम description of any organism should enable the people in any part of world to arrive the same name. They also ensure that such a name has not used for any other known organism बुझेला। तो आज मुझे कहूँ तापर आम खाली मुझे कही दूसरी जेनेरिक नेम तार स्पेसिफिक एपिथेट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यही सब विषय ये आम स्टार्ट करें बायोलॉजिस्ट आल्फालो ये आम स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास रे। तो से पर्यंत आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू देखूँ जेत आज फास्ट क्लास मत पढ़ेली ना आई पार्टा पूरा थियोरी पार्ट एते बुझार माने बहुत सारा लेखा है तो मुझे खाली लेखा किसी न पढ़ी डायरेक्ट बुझेदेवी तो सेमती किसी मत ठीक लगुनि कहीं लेखा सहित पढ़ी पढ़िका बुझेले ही किसी जापर तो से डायरेक्ट अंडरलाइन करके लाइन बाय लाइन मु बुझे एनसीईआरटी तो आपण मैंने देखु वीडियो कंप्लीट पूरा देखु तो आपण मैंने बुझीपारे ये सब ये चैप्टर किसी भी ना तो यार खाली नेमिंग्स गुड़ा अच्छी तो साइंटिफिक नेम्स गुड़ा अच्छे आछि ना आम नेक्स्ट क्लास रेगुलाली आज वीडियो अपलोड हम तो आपण मैंने रेगुलर क्लास करूँ आपण मैंने जदि दरकार अच्छी कि सिलेबस फिजिक्स रो कि केमिस्ट्री रो कि मैथमेटिक्स रो +2 फर्स्ट ईयर पिलांकर कि सेकेंड ईयर पिलांकर तो आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन माध्यम जनातु कि येस दरकार अच्छी बोली येस कि नो लिखंतु तो आपण मानक मु प्रोवाइड करदेबी 2-3टा वीडियो रे क्लियर हो किछि ना बहुत कम समय लगे तो आपण मैंने व्यस्त हुंतुनी मु आपण मानक गारंटी कहूँ कि क्वेश्चन सिलेक्टिव मु देबी आ जोटा कि एग्जाम रे निहाती आसीबो ठीक अछि। तो से पर्यंत आपण मैंने चैनल जोड़ी होकर रुहतु मो सहित वीडियो देखूँ तो चैनल जदि नुआ अच्छे सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ। थैंक यू।